what your competitors also do. We need to know what are the other person are doing in our industry or a niche. If suppose I'm creating a content around the blockchain, then I look some of the platform, preferably CoinDCX, OpenSea, NFTs platform, WazirX, what kind of content they are posting. Majorly, they are a bunch of content writers they have, but we can learn something from them too. What are people talking about it on Quora or Reddit? We simply search on Quora about your topic, then what people are talking about, whether they want to know about this thing or not. Generally, if we look at the thing called crypto or blockchain, people they want to learn. There are many more things like 90 over a period in a probably in 2030, 90% of the crypto will vanish off most of the time. Like we have the superior like dollar is ruling all over the currencies world, like similar to Bitcoin or Ethereum, or maybe the another crypto or any other thing like which might be still in a developing phase can rule and create a boom over other things. We need to learn the what you can learn from the search engine optimization. At the end, algorithms are working out behind. Majorly, if we look at the things like most of the time we don't read, we scan the content majorly in a fast manner. We scan it. We need to understand what uh, algorithms want, what kind of content our audience want. Majorly, like Instagram also planning to introduce the uh, keywords kind of features, like Google also using the keyword search engine optimization. Instagram also implementing these things too. Probably, if you want to grow your Instagram or any other platform too, you need to use more and more keywords and the relevant keywords in your content. There we can use also a Google. We can leverage a Google in a three ways. If we simply search on a Google, then don't press just write your topic and press enter. Simply let the Google give some suggestions or any kind of keywords. So ideas can came from those things too. Also, look at the section at the bottom or the related search too. Like generally what kind of questions are related to these topics. Second, people also search for, they have appeared in a Google search on a page that people also search for, that you can also add those ideas to in your content. The second type of people like preference, you can create a brainstorming session with a group. Like typically if we talk about our marketing, we want to create a marketing campaign, then as usual we are doing the meetings only for the marketing team so they can provide their ideas. So how we can create a campaign, impactful campaign for our audience or an event. Firstly, we need to pick a clear agenda of the meeting or any brainstorming session. Like suppose, like if you're talking about the marketing session, then they have a clear agenda like this is the event. They I want those ideas so we can market it and promote our event more and more. Create an atmosphere where people are comfortable. First, it is the most important thing, I think. The When people are comfortable, they can give their 100% ideas openly and freely and boldly. The ideas leverage the brain dumps. Majorly, if we look at the some person say that idea, try to add something in few words. Like we also do the storytelling or a kind of word story kind of things. Like one person add a word, another person add a word. Try to make a funny story or any impressive story. Use the sticky notes, whiteboards, or notebooks. I personally use notebooks more.
compared to the sticky notes to write my ideas. And if I don't have my notebook or anything near to write, then I use my smartphone using their notes. Remember the main goal, which to generate new and unexpected ideas. Majorly, you need to know the what are your major goals, what kind of content you are already created. You also know that it doesn't should repeat over and over again. That's it from my side. Thank you. I hope you like it. Gagan, it's really very nice. Thank you, Gagandeep. It was so technical, really. Yeah. But Really a brother. most of points were there. I was not aware. Yeah. I really Thank wasn't aware about all this because technicality में कभी लाइफ में नहीं उतरा यार. Really man. मतलब बहुत कुछ सीखना है यार आपसे भी. बहुत कुछ सीखना है मेरे को. Majorly, I used to write, I'm writing the content around the business, crypto, blockchain kind of stuff. If anybody interesting, they can follow me on my Sure, Instagram sure. or any other platforms. Majorly, I don't reveal my identity on the pages. Used to. Sure man, बहुत कुछ Thank सीखना है यार. ऑफलाइन मिलेंगे तब तो बहुत सीखेंगे. Really. और नीलेश भाई तो यार सच बोलूं, नीलेश भाई और मैं सबसे आगे होंगे. हम इतना मेरे को इतना पता है, हम तो सबसे आगे होंगे सीखने की बारी. So it was really great यार. बहुत अच्छे आइडियाज थे. मतलब कैसे आइडियाज ग्रेट जनरेट करना, बहुत टेक्निकल वर्ड्स थे यार. टेक्निकल गगनदीप, आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर सकते हैं हाँ, क्या? इंस्टाग्राम हैंडल आप जो चैट भी बॉक्स में इंटरेस्टेड मेंशन कर होगा सकते हो. वो Sure. So moving forward, now I will like to call Venvi, and she will also share about idea generation. So over to Hello. you, Venvi. Thank you, Nishant Bhaiya. So, hello everyone. My name is Ranvi, and I'm currently pursuing BTech in Computer Science and Engineering, first year student. So, as we all have heard, pen is always mightier than sword. So, uh, you don't need to have anything. You just have to express your feelings into a pen. As I'm a person who's not much more interactive with people, I don't share things with people so often. So, what I do is I always write my feelings on a paper. So that's how I started content writing. One day I was sitting idly, and there was a lot of things running into my mind. I had no one to share with, and I had no friends at that time. So what I did, I just picked up a paper and wrote whatever I can on a piece of paper, and that's how I composed it, and I composed it into a poem, and that's how I started my journey. And since then, I have been writing short paragraphs, poems, and everything. So it's not a difficult task to write a content for any one of us. We all can do. We just have to go with the flow that our thoughts are going with. So the basic things that you need for generation of idea is what are you writing for? If you're writing for a social cause, just think what's the hype in that social cause. The second thing, you can't express your emotions. Don't use bigger vocabularies. Only use the simple words that you use while you're talking to someone. There's no pressure to go with the rhythm or with the poetic manner. Just write whatever you feel like. It would surely, when you end up writing it, it will surely be a great content. And you can change that at a later stage if you find something that's not fitting in it at a later stage. And that's you have to basically, if you're writing something, a blog or something, then you have to go for the target audience. You have to see what you are writing and for whom are you writing that content, who is basically going to read that content, and what are you going to learn, and what are they going to learn from that. How are you going to express your feelings? You just have to express whatever is in your mind. That's how you can write a content, and you can show every mood in your writing while you're writing your content. You can show your activeness, your joyfulness, your sadness, your disappointment, everything through your paper and your pen. And it's not necessary that you show it to other people or you have to express it to other people. You just write it for yourself. When you'll read that after a year or two, then you will realize that yes, you had the potential that you discovered during an unwanted phase in your life. So I basically started writing like I was there was I had many. I'm much more aware about the social topics.
that's going on, and I read a lot for the social topics. So I basically, to express my joyfulness or angerness or sadness, I usually write it on a paper and I pen it down. So that's how I started my journey. And since then, I've been writing small captions or small quotes for everything. So that's how I started. And for if you are in a lack of vocabulary and you need to do that, all you have to do is just read short stories. If you're not into so much into, if you're not so much into novel, then read short stories or read newspapers, and that will surely help you a lot in increasing your vocabulary. Or read the articles that is being issued in the newspaper every day. That's enough for increasing your vocabulary, and you will increase it day by day, and you'll surely be, and that will surely end up into great content at last. That's all from myself. Thank you, Vanvi. Vanvi, as like you started, as you shared when you started, and what were the conditions when you started writing, I can relate because I was the same guy. You will not believe, I was the most introverted guy in my entire class. मतलब प्लस टू की बात है, फेयरवेल की बात है मुझे याद है। सोचो प्लस टू में मतलब बंदा स्कूल लाइफ कंप्लीट कर चुका है, फेयरवेल पार्टी में 35% जो क्लास थी मेरी, उन्होंने पहली बार मेरी आवाज सुनी। मतलब ऐसा बनता है ना, मैं बात नहीं करनी किसी से, मतलब सबसे अलग, मतलब सबसे इंट्रोवर्ट था। मेरे को मतलब डर लगता है किसी से बात करने का, अगर मैं बात करूंगा मेरे को खा जाएगा अगले वाला, ऐसा सोचता है। मतलब बोलते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द पोइट्स आर इंट्रोवर्ट। याद रखना, जो बात छुपा के रखते हैं वही लिखते हैं, जो बात Yeah, निकल गई that's वो नहीं how लिख I पाते। also started. I was like, I can talk to everyone, but I'm very bad at expressing myself, and I cannot tell what I feel to anyone. So I started by writing it down. That's how I started. या एग्जैक्टली यार, क्योंकि मेरी मेडिकल कंडीशन थी, मतलब मैं बोल नहीं पाता था पहले, मेरा था कुछ, मतलब मैं बात नहीं कर सकता था किसी से, उसकी वजह भी था, और मतलब कुछ अदर कंडीशंस भी थी, मैं किसी से बात करता ही नहीं था, इसी यही रीजन थे। तो फिर मैं लिखना स्टार्ट किया कि एटलीस्ट यहाँ तो मुझे कोई पहचाने। तो वैसे ही जैसे आपने बताया कि ट्रेंड जो क्या चल रहा है इस टाइम, ठीक है, मतलब अगर सोशल आपको कुछ सोशल पोस्ट पे लिखना है तो क्या ट्रेंड चल रहा है वैसे लिखो। वैसे ही मैंने भी एक लिखा था कुछ टाइम पहले, जब रिसेंटली, मतलब ये अराउंड 2 साल पहले की बात है, जब, क्योंकि जहाँ सुनो कॉलेज कंप्लीट हुआ था, मेरे दोस्त थे सारे, जहाँ सुनो हर तरफ एक ही बात चली थी, भाई कैसा है ब्रेकअप हो गया, भाई कैसा है ब्रेक, मतलब एक ट्रेंड ही बना दिया था ब्रेकअप का, मतलब अभी भी उसको मतलब बहुत हाइप बना दी उस चीज की कि ब्रेकअप बस नॉर्मल सी बात है, पर हाइप बना दी उसकी। ऐसे बोलने के नॉर्मल हो गया तो हो गया, क्या हुआ। तो उस पर एक लिखा था कि तस्वीरें मेरे फोन में तुम्हारी चाहे सभी वैसी हैं, पर किसी को बता नहीं सकता। प्यार तुमसे चाहे जितना मर्जी हो अभी भी, पर वो जता नहीं सकता। नंबर आज भी सेव है तुम नंबर आज भी सेव है मेरे फोन में तुम्हारा, पर तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकता। ऐसी कश्मकश में है जिंदगी की, जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात कि कोई अगर मुझे कुछ भी तुम्हारे बारे में आके कहे या पूछे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब शायद तुम पे किसी और का हक हो गया है ना, क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया है ना। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी फिक्र मुझे कितना सता रही हो, तुम ठीक हो या नहीं यही चिंता मुझे अंदर ही अंदर खा रही हो। फर्क पड़ता है मतलब बस इस बात से कि अपना आपा खो ना दूं। फर्क पड़ता है तो इससे कि लड़का हूं ना, किसी के सामने रो ना दूं। अंदर ही अंदर घुट के जीऊं तो चलेगा, पर अगर तुम्हें याद करूं तो इस समाज की आंखों में खलेगा। सही है ना? अब दुनिया की नजर में हमारी मोहब्बत पे शक हो गया है ना, दुनिया को हमारी मोहब्बत पे शक हो गया है ना, क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया है ना। बस मतलब ये एक वर्ड है ना, जहां ये वर्ड सुन लिया, खत्म। इट डजेंट मैटर हाउ यू स्टिल फील अबाउट समवन, डजेंट मैटर, बिकॉज अगले बंदे ने मूव ऑन कर दिया। यू हैव टू, क्यों? सोसाइटी बोल रही है भाई, यू हैव टू। इफ यू कांट, यू आर नथिंग, यू आर डेड। ऐसे बोलते हैं सारे, क्योंकि सभी ने सुना यार अपनी लाइफ में कि अगर वो चला गया तो तू क्यों रो रहा है, तू ये वो फलाना, मतलब फिर ऐसा नहीं होता। अगर साथ दोनों की मंजूरी चाहिए तो अलग दोनों की मंजूरी से होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थॉट दैट टाइम, एंड इसलिए लिखा था मैंने। ये बहुत लंबा है, पूरा बता नहीं पाऊंगा, मतलब अराउंड 25 मिनट का ही अगर मैं बोलने जाऊँ तो, बहुत लंबा लिखा है इसके ऊपर। तो इतना ही सुनाऊंगा इसके बारे में आगे भी। तो आइडियाज यार, सीरियसली आई कैन रिलेट वट एवर वैन वी सेड। And now moving further, I would like to call Shavni, and she will just share her ideas regarding improvisation, how you can improve your poetry or your writing. Hello everyone.
Hi everyone, I'm Shravani, and I basically started writing 3 years ago. And because of pandemic, I started improving. Like pandemic में कुछ time बहुत था, करने को कुछ नहीं था. So that's when you all like started अपनी hobbies को खोजना और उसको improve करना. I used to write as a kid, but a dog who could talk was not a presentable story. Like लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन presentable नहीं है. That's what like most of the guys face issues in. So, but then वही बात है, it's the beauty of any art form कि that is already inside you. You just have to like find a way how to put it and present it. So I would like to begin with a poem I wrote. I have a blog named Pen and Stories, which is Kalam or Kahaniya in Hindi. And I wrote a poem named The Autumn Leaf in Me. Can you guys see my screen? Yes, Yep. it is visible. So I'd like to start by this. Leaves were falling on a breezy night. Fogs and waves covered my sight. Yet I had a vision long, finding places where I belong. Drops were falling, one from the sky and one from my eye. Etching in my brain was the question why. I saw many people in my life, everyone carrying a pocket knife. With words they spoke and letters they wrote, yet another Shakespeare died. I saw many moments in my life, emotions like bees in a beehive. They stung sometimes, but quenched thy heart, resurrecting me when I fell apart. I see it now, I see it all. Where there is rise, there also is fall. The world I saw, which made me cry, was not the answer to my why. My longed vision in the blues is the story that I choose. Embarking upon the road less traveled, everything is leisurely unraveled. Now, this autumn, I can't deny I found my why in the sky. So, this was the first poem I wrote. As Nishan Bhai told, he is a poet, and poetry is like the most beautiful form of writing. जिससे सबसे ज़्यादा फीलिंग्स आप शेयर कर सकते हैं तो वो है पोएट्री से एंड एनीवन कैन रिलेट टू इट आई एम श्योर ऑलमोस्ट ऑफ यू हैव थिंक ये हम सोचते रहते हैं हमारी लाइफ में भी बट वी जस्ट डोंट हैव लाइक enough words or enough feelings to like share it with people. Many of you are shy, but once you start writing and once you start sharing it with others, it becomes like natural to you and it comes out like naturally. You don't have to like make efforts for it. As our amazing content writers already told you about poetry and how to generate ideas, how to jot it down, I'm gonna tell you ki after you have like after you convert your thoughts into words and your words into you jot down into paper. Now what do after that? Like you have something, but it's not presentable. So you have to make it like more attractive. सामने वाले को convince करना पड़ता है. So depending upon what you're writing, if it's fiction or it's not non-fiction, it's divided into two categories, that is creative writing and persuasive writing. Yeah, I share my blog link at the end. And so as a matter of fact, marketing में सबसे ज़्यादा writing जो use करते हैं, that is persuasive writing. As the name suggests, लोगों को persuade करना ही उसका काम होता है. Like it will keep hammering on your brain कि हाँ ये बात है, and then it will be stuck in your head forever. Like most of the companies उनका काम ही यही होता है कि तुमको persuade करे कि हाँ हमारा product खरीदो. That is what persuasive writing is. I'm sure most of you have heard of taglines. I would like name one, and you guys can type in the chat box what company it is. The first one is I am loving it. Yes, anyone? McDonald's. Yeah, McDonald's. नाम सुनते ही वही सबसे पहले स्ट्राइक होता है McDonald's. Then there is a lot of Pepsi का भी है. IPL तो अभी शुरू है. There are a lot of taglines. That is the reason of the taglines, that it will keep hitting you. कहीं पे भी आप नाम पढ़ोगे, that will be the first thing which comes to your mind. And especially you all must be having apps like Zomato, Swiggy, Myntra. इनके notifications or emails, have you seen them? They start like, are you feeling down? Order a pizza. अब नहीं होगा मन पिज्जा खाने का, you'll still order it, because that's how they have that power of convincing you कि like yes we are there. And notice how they started with a question.
like when you start your writing with a question, you feel like yes you are a part of the story, और वो आपको like interactive बनाते हैं. So whenever you're writing something, the first is repetition, like in taglines. Repeat करते रहोगे, that will be stuck in their head. The second is interacting with people. Start with a question. आप like normal sentence start करोगे, it won't be that effective. If we'll start like how are you? Have you seen that movie? ऐसे शुरू करोगे, तो the person who is reading that, he would know, like he would be more interested कि yes इसमें मेरा भी thought included है. So that is what persuasive writing is. Like we have to use it in ads, thought pieces. जो मैंने लिखा है, that are my thought pieces. इसमें A B rhyming scheme है. So that what hooks you into that poem. And not only poem, there are like stanzas, stories. I'll share my blog links, and you can notice that questions पूछने से, और like you can directly speak to the audience. You can use like third person, like आपसे बात कर रहे हैं. Then you will feel like you are a part of that story, और वो आपको ज़्यादा interesting लगता है. So basically, there's Aristotle ने एक theory दी थी, like the three appeals, that is ethos, logos, and pathos. That means ethos is like an appeal to trust and argument. These are the three major steps of persuasive writing. कि आपको audience को ये यकीन दिलाना है कि whatever I am saying, that is right. At the end of the day, you will make them like उनको ये लगेगा तुम जो बोल रहे हो वही सही है. That's how these companies also works. The second is logos. That means an appeal to the logical and rationality of people's mind. Suppose if I will tell you कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा डार्क चॉकलेट खाते हैं, and if some other person tells you कि 71% of American population prefers eating dark chocolate, you would be more believing in the person who stated like logistics जिसने तुमको दिया है, because that's like somewhere in your mind कि हाँ ये बंदा sure है, he knows like the percentage and whatever it is. So that's how you sound more convincing. You have to use logistics, statistics. कि इतना ग्राफ चल रहा है, ये साल में इतना हुआ था. So people are more willing to believe you when you have logic in your statement. Illogical बात तो कोई क्यों ही मानेगा. And then there is pathos, the most important thing, that is the appeal to the emotional side of people. That's where they relate the most. Poetry में भी you have like whenever you are reading something, आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने साथ रिलेट करने की कोशिश करते हो. बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी आप सुनते हो, तो उसकी लिरिक्स जो होती है, यू ट्राई टू रिलेट कि यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था, इट हैपेंस विद मी, इट हैज हैपेंड. और लाइक जब भी आप रास्ते से जा रहे हो, यू सॉ समवन. सो फोटोग्राफी और राइटिंग इज काइंड ऑफ सेम, बस फोटोग्राफर्स अपने फोटोज के द्वारा बोलते हैं और राइटर्स अपने कलम के द्वारा. उतना ही फर्क होता है. आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, कोई चाय बेच रहा है, एक ग्रुप बातें कर रहा है, दैट्स वेयर यू नोटिस द स्मॉल थिंग्स, और उनको आप जब डिस्क्रिप्शन में लिखते हो, दैट्स व्हाट क्रिएटिव राइटिंग इज, जिसमें देयर आर अ लॉट ऑफ फीलिंग्स. फिक्शन, हैरी पॉटर देखा होगा. जिन्होंने लाइक मूवी नहीं देखी बट बुक पढ़ी है, दे वुड नो कि बुक पढ़ने में जितना आपको विजन्स आता है ना, उतना ग्राफिक्स मूवीज में भी नहीं दिखाया है उन्होंने. व्हेन यू रीड द बुक, यू गेट टू नो कि इतने सारे ऐसे सीन्स है that you'll start imagining that is वो real, मतलब सच्ची हो रहा है. And there was this movie Kapoor and Sons, you might have watched, some of you might have watched. उसमें they both are having a chat, और वो छोटा भाई उससे पूछता है कि कहानियों में लाइक जैसे रियल जिंदगी में हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती है, so why do they show it in a book? So his brother responds like कि क्योंकि लाइक हमारी लाइफ में हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती है, इसलिए हम वो किताबों में ढूंढते हैं. सो वट एवर वी लैक इन आवरसेल्व्स, दैट्स व्हाट वी फाइंड इन अदर्स. अब सपोज नीलेश भैया, निशान भैया, आपने कुछ लिखा है और वो मेरे लाइफ में आई वांट दैट बट आई डोंट हैव दैट, सो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट. वही बात होती है. एंड इन क्रिएटिव राइटिंग आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई स्क्रीन. Can you guys see this? Yes. For example, there is she's walking through the streets. That is how a normal person would write. And if you want to make it like more creative, it will be her foot were crushing the dry autumn leaves on the narrow street as she moved forward, leaving a scent of past behind. Now her इसमें तुम्हारा subject भी आ गया. You have described how she walks.
बस वॉक करना दैट इज एन एक्टिविटी, वो कैसे वॉक कर रही है दैट इज एन इमोशन, दैट इज हाउ यू विल राइट इन दैट. शी वाज nauseated and weak. तो इसको हम लिख सकते हैं. Sorry to She interrupt, was Shravani, Are but you sharing your please, screen? Actually, yeah, there is some. I can see बस that. गूगल मीट मतलब, का पेज शो हो रहा है ना, आपको yeah, कंटेंट शो नहीं हो रहा. okay, okay. Just a minute. Maybe. Can you see now? yeah, now it's perfectly visible. Yeah, sorry for that. So yeah, I was on this. She was nauseated and weak. So like if a normal person would write, it would be like just simple line ki fact state kar diya. But if you want to make it more creative, you have to add details to it. That is like the most important thing about adding details. She was seeing stars in the day. Her eye bags couldn't carry the weight of her pale eyes. Her legs dangling like ropes, barely holding her body. दैट इज हाउ वीक शी इज कि वो अपनी बॉडी भी नहीं कंट्रोल कर पा रही है. दैट्स लाइक द पावर ऑफ राइटिंग कि यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स एंड लाइक इमेजिनेशन इज द power of writers. That's what I think. And for me, basically, I started writing because I used to read books and I used to think कि maybe इसकी story कुछ अलग होती तो कैसा होता. And then I started experimenting with things. And starting में किसी के पास भी words नहीं होते हैं. When you start, धीरे धीरे everything comes to you naturally. So yeah, that's how I started writing, and that was my blog. Thank you so much. थैंक यू श्रावणी. यस, मतलब आपके फैक्ट्स बिल्कुल सही थे. जैसे आपने हुक्स के बारे में जो बताया ना आपने, तो मतलब मेन लाइन जो बार बार स्ट्राइक करे दिमाग में, वही हम सॉन्ग्स में सुनते हैं. आप सॉन्ग्स क्यों सुनते हो? क्योंकि उनकी मेन आपको हुक्स लाइन बहुत पसंद आती है, जो मेन लाइन होती है उनकी. कभी काफी लोग तो इसीलिए सुनते हैं क्योंकि जो मेन लाइन जो स्ट्राइक करती है बार बार दिमाग में. दैट्स ऑल अबाउट हुक लाइंस. पोइट्री में भी सेम होता है कि आपको बस एक ऐसा लाइन चाहिए जो अगला बंदा वो एक लाइन सुनने के बाद भी ना, मतलब बस बंदे बोले मेरे को पूरी सुननी है ये, बस वो एक लाइन के बेस पे. बाकी बीच में आपने क्या लिखा है डजंट मैटर, बस एक हुक लाइन चाहिए आपको, बस एक. वही पोइट्री में हम फॉलो करते हैं. और आपने जैसे बताया कि आइडियाज के बारे में कि हाँ मतलब क्रिएटिव कोई भी चीज मतलब सोचनी है क्रिएटिव वे में कैसे उसको डिस्क्राइब करना है. आई रिमेंबर एन इंसिडेंट. मतलब मैंने चंडीगढ़ मतलब से पार्क में मेरे को आदत थी कि मैं रात को निकल जाता था पार्क में अकेला ही. रात को मैं 10 बजे निकलता था, सुबह 3-4 बजे मुड़ जाता था, वहीं बैठता था पार्क में. मेरे को आदत थी उस टाइम. तो आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर ऑन अ चेयर, वन ऑफ द चेयर्स, एंड मतलब मैं ऐसे आराम से बैठ के देख रहा था. तब एक बात दिमाग में ऐसे है कि आराम से बैठा हूँ फिर भी दिमाग में बहुत कुछ आइडियाज आ रहे हैं. शांत है, कोई भी नहीं है वहां पे, दिमाग में आइडिया. तो उसी चीज पे एक लिखा था कि एक लाइन थी कि हल्के से कानों के पास आके कुछ तो गुनगुना जाएंगी, हल्के से कानों के पास आके कुछ तो गुनगुना जाएंगी. कभी आराम से बैठ के देखिए, खामोश रातें भी कितना कुछ सुना जाएंगी, खामोश रातें भी कितना कुछ सुना जाएंगी. इट्स ऑल अबाउट कि आपको कुछ सुनने की जरूरत है ही नहीं. अगर आप अकेले भी हो ना, कुछ भी नहीं सुन रहे, आप आइडियाज आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगे ही, कंटिन्यूसली करेंगे. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बी काम. आराम से, क्योंकि जब आप एक्साइटेड होगे आइडियाज आएंगे ही आएंगे. अगर नहीं आ रहे, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, सब कुछ भूल जाओ. जो फर्स्ट थिंग दिमाग में आ रही है ना, वो लिखो, वो आपका नया आइडिया होगा. हमेशा नए आइडियाज ऐसे ही जनरेट होते हैं. आराम से बैठ जाओ, जो पहली चीज दिमाग में आ रही है उस पर लिखो, क्योंकि आप उस टाइम वो चीज फील कर रहे हो. जब कुछ फील कर रहे हो उसको लिख रहे हो, वो अगला बंदा ज्यादा अच्छे से समझेगा. वैसे ही जैसे हम सभी अभी एलपीयू मतलब ऑफलाइन के लिए जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं. जो नए स्टूडेंट, जैसे मैं नया हूँ एलपीयू में, हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस एलपीयू से कि हम जाएंगे. ये कुछ ड्रीम्स होते हैं, हर किसी के ड्रीम्स होंगे, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी एलपीयू से. तो वैसे ही मतलब कुछ जा रहे हैं जिस जॉब्स के लिए, कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ एक्सपोजर के लिए जा रहे हैं, कुछ अपना टैलेंट मतलब और एनहांस करने के लिए जा रहे हैं. तो वैसे ही मतलब उस पर भी एक मैंने लिखा था कि सुना है ख्वाबों की नगरी है तुम्हारे शहर का नाम, आऊंगा कभी अपने टूटे ख्वाब लेकर, आंखों में आंसू और दिल पे जख्म पायाब लेकर, आंखों में आंसू और दिल पे जख्म पायाब लेकर. ख्वाबों की नगरी है तो कुछ ख्वाब टूटे लोग भी बसते होंगे, आऊंगा कुछ पन्नों पे समेटी खुशियां नायाब लेकर, कुछ पन्नों पे समेटी खुशियां नायाब लेकर. अगर बीच सफर में रास्ता भटक जाऊं तो भीड़ में नाम लेना मेरा, गांव से होना तो शहर के तौर तरीके समझ नहीं आते, तो अगर लड़खड़ा जाऊं तो हाथ थाम लेना मेरा. फलक को हासिल करने का कोई ख्वाब नहीं है मेरा और ना ही सजाऊंगा मैं, फकत कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हासिल हो गए तो लौट आऊंगा मैं. उस शहर में बसने का कोई इरादा नहीं है मेरा, बस कुछ खुशियों के जुगनू वहां से सिमट अपने गांव को सजाऊंगा मैं.
अपने गांव को सजाऊंगा मैं। अगर कुछ हासिल ना भी हुआ तो वापस लौटते वक्त हाथ खाली नहीं होंगे मेरे। एक सच्चाई होगी उस नगरी की, जिससे जो मेरे गांव में लोग बैठे हैं वहां जाने का सपना सजाए, वो बर्बाद नहीं होंगे, वो बर्बाद नहीं होंगे। सुना है ख्वाबों की नगरी है तुम्हारे शहर का नाम, आऊंगा कभी अपने टूटे ख्वाब लेकर, कभी अपने टूटे ख्वाब लेकर। तो दैट्स ऑल। मतलब यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट जस्ट समथिंग। कुछ भी अगर आपने स्टार्ट किया है ना, ट्रस्ट में आप बहुत अच्छा लिखोगे। बस आपको बस लिखते ही जाना, रुकना नहीं है। जो दिमाग में आ रहा है लिखते जाओ, जो दिमाग में आ रहा है लिखते जाओ। ये मत सोचो कि यार सही है गलत है, सही है गलत है। और जैसे इम्प्रोवाइजेशन की बात आई ना, तो कभी भी जो आप लिख रहे हो ना, उस चीज को और एनहांस कैसे करना, वो मेरा अपना पर्सनल, मतलब जो मैं अपने पर्सनली यूज करता हूँ कि एज यू ऑल नो, हर इंसान की दो कहानी होती हैं। पहली जो सबको बताता है, दूसरी जो वो सबसे छुपाता है। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, दो कहानी होती है। सेम जो मैं मानता हूँ, जो आप दिखाते हो वो ऑलरेडी सबको पता है। अब उसके ऊपर लिखोगे ना, कुछ नई बात नहीं लगेगी। लोग बोलेंगे हाँ यार, वी नो अबाउट दिस गाय एंड वी नो ही इज लाइक दिस, यार ये ऐसा ही है, ऐसा लिखा है, कुछ नई बात नहीं होगी। पर जो आप लोगों से छुपा के रख रहे हो कि यार, मतलब आप डरते हो कि अगर मैं ये बात सामने लाऊंगा लोग मुझे जज करेंगे, मुझे बुरा बोलेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, या कुछ भी मुझे इग्नोर करेंगे या बाइकआउट कुछ भी करेंगे। पर ट्रस्ट मी, जो आप फील कर रहे हो छुपा रहे हो, लोग भी वैसा फील करते हैं, वो भी डरते हैं सोसाइटी से, वो भी छुपा रहे हैं। तो उस चीज को बाहर लाओ, लिखो उस चीज के बारे में। जब आप लिखोगे ना, लोग सोचेंगे कि यार ये बंदे ने ऐसा कैसे लिख दिया, कि इस पर्सन को हम बचपन से जानते हैं, ये ऐसा नहीं है, फिर इसने ये कहाँ से लिख दिया। कहीं ना कहीं वो भी फील करते हैं, तो वो उस चीज को आगे और शेयर करेंगे, क्योंकि उनमें वो हिम्मत नहीं है कि वो मन की बातें बाहर निकालें। पर आपने वो निकाली है, वो रिलेट कर रहे हैं, वो शेयर करेंगे, तो इसीलिए आपको और मोटिवेशन मिलेगी लिखने की। और ये सबसे ईजी और सबसे इफेक्टिव तरीका है अपनी, मतलब पोइट्री को एनहांस करने का, लोगों में और ज़्यादा हाइप बनाने का, क्योंकि वो ऐसे ही रिलेट करेंगे। कुछ नया दिखाओ उनको, जो आपने कभी दिखाया नहीं, अपना वो चेहरा दिखाओ जो छुपा के रखा है हमेशा। क्योंकि आप लाइफ टाइम छुपा के रखोगे, अंदर बंदे को गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है कि यार मतलब कुछ बातें जो अंदर रहती हैं, निकालो यार, पोइट्री है। अगर उनको क्या पता कि आपकी अपनी ये कहानी है, वो सोचेंगे क्या पता आपने किसी और से इंस्पायर होकर लिखी है। आपके मन का मतलब वेट में जो आपको बोझ था मन का, वो भी हल्का हो गया, लोगों को पसंद भी आ रही है। दैट्स ऑल। बस ऐसे ही आप मतलब इफेक्टिवनेस ला सकते हो अपनी क्रिएशंस में। इसी के साथ आई वुड लाइक टू कॉल आर्या, एंड और वो अपना स्टोरी टेलिंग के बारे में बताएंगे। तो आर्या, Yes, Bhaiya, thank you. ओवर टू यू। Am I audible? या ऑडिबल Yeah, है। yeah. Okay. So, first of all, good afternoon, everyone. I am Adya, and today I am going to tell you how I started my content writing. So, creating content is not an easy task, but it is not that difficult either. There are lot of techniques to good content, but one lot things to remember is not amount of content can fix a bad product. Therefore, you must be a very vigilant while choosing the topic or product you are writing for. Secondly, writer write like a reader. Whatever you are write, if it appeals look as your reader, and if you are happy with that, whatever you have written, only then you can say it is a good content. So I wrote one story and now I'm going to share with you all. So just a minute. So is it visible now? या इट्स विजिबल। Okay. So story is nearer to vital truth than history. So I have. Am I audible? यस यस ऑडिबल। Okay. Okay. So this just happened when I live in Mumbai. This is an incident of year 2014 when my final exam of standard 7 got over and summer vacation started. My father decided of spending vacations in New Delhi with our relatives. As my uncle worked in Indian Railway Association, we got our ticket for Delhi earlier than any person.
So me, my mother and my father were started our journey for Delhi. It was really fun to travel while sitting in driver's compartment as the driver was my uncle's friend and I was decided to traveling with him. The train was full on speed. When half of the day was over, it was quite dark and the train was 400 kilometers away from Mumbai. So suddenly the train stopped because of the red signal. It was really a big signal of 20 to 25 minutes. The place where the train stopped was not so scary. It was all slums there. There were many small houses like huts, but no one was out it was. Almost like pin drop silence, but what happened afterwards will blow your mind. It was 2 a.m. sharp. An old lady with her stick in hand, stick for a support while walking, appeared from the road, coming from the slums. She was short in height. She came near the driver's compartment, where was the driver and I sitting. I was sitting at the window, like all kids do for watching the scenery. Out of the window, the old lady came to me and called me. Pulling my sleeve, she said, "Babu, thoda sa khana de do, and please give me some food." I wasn't having anything to give her, so I asked the driver to give her something to eat. The driver shouted at me and said, "Don't sit at the window." He shouted at the old lady too and said, "मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए यहाँ से चली जा. I have nothing to give you. Go from here." And I used some abusive word to make the old lady go from here. Afterwards, the train again started to go, and then he politely asked me, "Hey, do you want to sit at the window?" Yes, I said, but I asked him, what did he shouted at me when I was first sitting near the window? Then he explained me everything, and by listening to that, the whole journey to Delhi, I didn't sit near the window. He said me to see outside the window and see that how much is the distance between the ground and the train's window where I was sitting. He said the window is 11 feet above the ground. How can a human and that too a short-heighted old lady can get up to 11 feet and ask for food? That made me understand that she was not a living human being. The driver told me that it was the spirit of the lady who was very poor and used to ask for some money or for food while the train passing from there had to stop because of signal. But 2 years back, the lady died in a train accident when she was crossing the railway track and fell down, and before she could fix herself to get up, she was turned into pieces. He said she is not a bat, but if you once give her some to eat, she follows you, not to hunt you, but to get some to eat while she is hungry. So this was my story. Thank you. थैंक यू आर्या. आर्या, आई जस्ट वांट टू आस्क कि सच में ऐसा हुआ था रियली? ये रियल स्टोरी है ये. और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा किसी को घोस्ट वगैरह पे बिलीव है या फिर किसी ने कभी देखा है ऐसा रियल लाइफ में? सच बोलो, हिमाचल से हम. Okay. हिमाचल से. हिमाचल मान इन चीजों के लिए जाता है. हिमाचल मैक्सिमम हाँ इन चीजों के बिल्कुल. लिए मान जाता है. इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसा होता है, क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, नहीं, मैंने पर एक सुना दो काफी बार है इसको. मैंने एक दो बार किया ऐसा. और अभी भी मैं जब मुझे बहुत डर लग रहा था, अभी भी मैं जब स्टोरी बता रही थी तो आई वाज सो स्केयर्ड दैट टाइम. अरे सीरियसली यार, गूज बम्स आ गए थे सीरियसली. चलो, बहुत अच्छा लगा यार सुन के. मतलब कुछ कहानी होती है, जैसे इंसिडेंट ही आपका था, आपने बताया कि मतलब जो भी सुनाया आपने, ठीक है, 7th स्टैंडर्ड तक आपने, मतलब इतना हाँ, पुराना मैंने इंसिडेंट. 7th स्टैंडर्ड में. हाँ, अब तक वो मतलब इतना अच्छे से दिमाग में स्ट्राइक कर दिया कि आपको अभी भी याद है, वो लाइफ टाइम याद रहेगा. नहीं, मैं ऐसे थोड़ा ही कुछ थोड़ा एक्चुअली भूल चुकी हूँ. जितना मुझे याद था मैंने वो सारा लिखा. मतलब वही ना, कुछ चीज होती है, मतलब कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो लाइफ टाइम याद रहते हैं, और उन पे जब लिखते हो ना, बहुत अच्छा लिखा जाता है यार. क्योंकि ये आपने जबरदस्ती नहीं लिखा, आपका मन किया उस चीज को लिखने, क्योंकि आप वो भुला नहीं पा रहे, आपका मन किया वो चीज लिखने का, तो आपने लिखा और बहुत अच्छे से लिखा है यार. वो बहुत अच्छा थैंक था. यू वेरी मच. थैंक यू. सो मतलब आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग यार. एक और चीज है कि जैसे ही मैंने सोसाइटी के जैसे
मैंने कुछ अपना जॉनर चेंज करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं लिखता रहा मैक्सिमम ये मतलब ब्रेकअप वगैरह लव वगैरह इस पे लिखता था। मैंने कुछ टाइम पहले कोशिश की लिखनी हो चेंज करने की, तो एक रैप की फॉर्म में लिखा था मैंने सोसाइटी के ऊपर, उसका मैंने नाम दिया ट्रुथ, इस पोइट्री का नाम दिया ट्रुथ। तो मतलब मैं बिल्कुल ऑफ बीट रहता हूँ, मैं रैप नहीं कर पाता, बहुत बुरा हूँ मैं इस चीज़ में, तो मैं उसको एज अ पोइट्री सुनाऊंगा। आई होप मतलब पसंद आए आपको। कि पंजाबी में मैं अपने भी देखिया मैं गैर भी देखिया, माफियां भी देखिया ते फैर भी देखे, वफादार भी देखिया गद्दार भी देखिया, पिठ पिछे हुंदे कई वार भी देखिया, पूरियां भी देखिया अधूरियां भी देखिया, मजबूरियां ते प्यार विच दूरियां भी देखिया, झूठ भी है देखिया मैं सच भी है देखिया, चुप रुकिया नहीं पावे चुबा कच भी है वेखिया, पिंड नूं भी देखिया जहान भी देखिया, फिर जाके खुद च शैतान भी देखिया, मंदिर भी देखे भगवान भी देखिया, मैं धर्म ते लड़दा इंसान भी देखिया, मैं धर्म ते लड़दा इंसान भी देखिया, ईमानदारी दिसदी नहीं दिसदा बस छल्ला, अक्ल ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਬਸ ਬੱਲਾ, ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ, ਹੁੰਦੀ ਸਕਸੈਸ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਜਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਫੇਕ ਹੀ ਲੁਕਿਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੈਰਾਂ 'ਚ ਠੁਕਿਆ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਹਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਭ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਲੇਸ ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਸਭ ਯਾਦ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਭ ਯਾਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਖਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਸੱਚਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜੀਣਾ ਬਚ ਬਚਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੱਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪੇਨ ਟੂ ਮਚਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਬਣਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਾਬ ਹਟਾਉਂਦਾ ਏ, ਸਾਲੇ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਖਾਂਦੇ ਜਹਾਨ ਨੇ, साले सारा बेच खाते जहान ने। तो ये मतलब मैं कभी परफॉर्म कभी नहीं कर पाया किसी के सामने, क्योंकि मैं हमेशा ऑफ बीट रहता हूँ। मतलब बीट पे जब भी आता हूँ ना, मतलब बीट कहीं जाती है, मेरे वर्ड्स कहीं जाते हैं, तो मैं इसको ऐसा पोइट्री कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा। जब भी बोलता हूँ तो एक फ्लो आता है, पर वो ऑफ बीट ही होता है हमेशा। तो मतलब कोशिश जारी है। आई होप जब तक ऑफलाइन आऊंगा तब तक मतलब कवर कर लूंगा, और तब सुनाएंगे सबको ऑफलाइन मोड में। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ मतलब आज हमारे सेशन का मतलब बस इतना ही था। मतलब वी आर नॉट प्रो, मैं बिल्कुल प्रो नहीं, मैंने भी स्टार्ट किया भी लिखना। बस ये था कि सभी स्टार्ट करें लिखना यार, क्योंकि लिखना बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बस हमें स्टार्ट करना है। क्योंकि मुझे बहुत आगे बोलते हैं लोग, मैं मेरे इंस्टाग्राम पे मैं इसलिए बोलूँ, मुझे बहुत एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। एक बार जब मेरे पास आए मुझे बोलने की मेरे को लिखना है, एक बार ट्राई तो करो उससे पहले। आफ्टर दैट इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम एनी ट्रबल कुछ भी आ रहा है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जैसे मैं मतलब अपना हैंडलर भी मैंने मेंशन कर दिया चैट बॉक्स पे, मैं हैंडलर हमेशा देता हूँ अपने आप को 24/7। किसी को कभी राइटिंग में, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग, रैप, सिंगिंग, किसी चीज में, मतलब लिरिक्स में, सिंगिंग नहीं लिरिक्स में, किसी को दिक्कत आए कभी भी कॉन्टैक्ट, मैं कभी मना नहीं करता। बस ये है कि यार अच्छा लगता है जब कोई लिखता है, उससे जब इंटरेक्ट करते हैं बहुत अच्छा, बहुत सीखने को मिलता है। मैंने बहुत कुछ सीखा यार। जैसे गगनदीप भाई यार टेक्निकली बिल्कुल सही यार, बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया। वैन वी आई रियली मतलब लाइक कि आपने किस तरीके से अब स्टार्ट किया, कैसे आपने मतलब रिलेट करा, बहुत अच्छे से किया यार। कि कैसे स्टार्ट करता है हर पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पर्सन आपसे रिलेट कर सकता है वो चीज़ कि कैसे आपने स्टार्ट किया, और हर वैसे ही करते हैं। मैक्सिमम पोइट्स अपने डार्क फेस से स्टार्ट करते हैं, जब वो किसी से शेयर नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स, मैक्सिमम पोइट्स। और श्राव जैसे आपने बताया, आपने इसलिए स्टार्ट किया कि जो हर चीज को अलग तरीके से देखने का सिनेरियो, मतलब नजरिया बदलना, कि क्या पता अगर ये चीज ऐसी होती तो क्या होता। क्योंकि वो भी एक रीजन है, बहुत लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, और आपने बहुत अच्छा लिखा। आई पर्सनली लाइक ऑल योर कंटेंट। और आर्या गूज़बम्प्स दे रही है स्टोरी ने, पर बहुत अच्छी स्टोरी थी यार, बहुत अच्छी स्टोरी थी। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हम ऑफलाइन आए, ऐसे इवेंट्स ऑफलाइन करें यार, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे, बहुत सीखने को मिलेगा, और मुझे बहुत कुछ सीखना है आप सबसे। सो सागर भाई ठीक है, अटेंडेंस फॉर्म चैट बॉक्स पे है, तो आप वहीं से मतलब अटेंडेंस मार्क कर सकते हो सर्टिफिकेशन के लिए। और इतना ही था हमारा यार, बस इतना है कि स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो। बाकी किस मोड़ पे जाओगे, कैसे जाओगे, वो सफ़र दिखा देगा। एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। भागना है, दौड़ना है, गिरना है, सब होगा, स्टार्ट तो करो यार। रणवीर सिंह एक बार लिख लोगे तो फिर अपने आप वो सही होता जाएगा। एक मूवी बस का एक बार डायलॉग है लिख नहीं रणवीर सिंह का,
कि जितना भी है And don't hesitate to share it with everyone. बस स्टार्ट करो। तो इतना ही था हमारी तरफ से। Thank Anybody you so want to much, ask? Nishant bhai, Shravani, Benavi, Gagandeep and Arya. It's a really great session. मुझे इतनी expectations नहीं थी कि इतना अच्छा होगा, really नहीं थी, but बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा session था really, and I really Actually, enjoyed and learned a lot. And yeah, Nilesh भैया. it's Guys, really nice and audience जो थी वो मतलब बिल्कुल वेट कर रही थी और चैट बॉक्स भरा पड़ा था मैंने देखा and I request Arman and Ayushi to please take. Okay, so I really enjoyed the event. बहुत बढ़िया था सेशन। और नीलेश भैया, हेलो गाइस, आई एम ऑडिबल? Yeah, you are audible. तो नीलेश भैया एक ना इवेंट कराते हैं, आप बताओ ऑनलाइन या ऑफलाइन का, पोइट्री का, ठीक है? और उसमें जज रहेगा निशांत, ठीक है? ये इवेंट पक्का, हाँ, कंपटीशन होगा। इवेंट प्लानिंग और मार्केटिंग टीम कोलैबोरेट करेगी, बढ़िया इवेंट कराएंगे। आप ये बता देना कब। पक्का इवेंट प्लानिंग से सारे कोऑर्डिनेटर्स जितने चाहिए होंगे, ऑफलाइन में कराना ऑफलाइन में, ऑनलाइन में कराना ऑनलाइन में। निशांत रहेगा जज, और बहुत बढ़िया इवेंट होगा ये। और वो ये वाला जो इवेंट होगा, हम क्लब इंटर क्लब कुछ करेंगे, बाकी क्लब्स में से जो आना चाहते हैं पोइट्री के, वो सब करेंगे। बहुत बढ़िया इवेंट था आज। आई रियली गॉट गूज़बम्प्स। किसने स्टोरी सुनाई थी? आर्या ने, राइट? आर्या, इट वाज, मेरे को सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इट वाज सो गुड। मतलब मे बी ये होता भी है, हम लोग कह देते हैं सुपरस्टिशियस ऐसा कुछ, बट इट हैपेंस। सो मे बी हर किसी के साथ नहीं, लेकिन होता है, मिरेकल्स होते हैं। अगर आप बिलीव करने के ऊपर है, अगर आप बिलीव करते हो तो सब कुछ है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। बट इट वॉज अ ग्रेट सेशन, बहुत मजा आया। मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़ा रहा हूँ इस सेशन में। इट वॉज अ ग्रेट सेशन, एवरीबॉडी। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला सेशन था, सीरियसली मेरे को परफॉर्म करे बहुत टाइम हो गया। इससे पहले एक इवेंट परफॉर्म किया था जो नीलेश भाई ने मेरे को बताया था, बस वो बहुत टाइम हो गया यार, मेरे को पता नहीं था मैं इतना कर पाऊंगा। सीरियसली पहली बार किया मेरे भाई। एंड आई ऑलवेज एडमायर कंटेंट क्रिएटर्स, बिकॉज मुझे लगता है दे आर मैजिशियंस। आप लोगों की वर्डिंग्स एक मैजिक हो जाती है, आप लोग एक इवेंट में जान डाल देते हो। सो अपनी और मैं जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर से हेल्प मांगता हूँ, मुझे बस ये लगता है यार ये बस बहुत जान डाल दे। तो मेरे पास सिर्फ अभी तक 2 कंटेंट क्रिएटर्स को मैंने अप्रोच करा था, एक श्रावणी और हर्षिता, जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी इवेंट लिखने में। सो आप लोग तो बहुत बेस्ट हो, बेस्ट के बेस्ट हो। सो बाकियों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी साथ दो हमारा, हम इवेंट की अलग पहुंचा देंगे इवेंट को। आप लोगों की वर्डिंग्स ही कमाल कर देती है। सो नाइस। Thank you so much, Arman and Ayushi. Can मुझको तो बहुत मजा आया ऐसे सुनने को मिला। एंड अच्छा इवेंट हो सकता है आगे, जो मैं कह रही थी ना कि लाइक आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसमें फिर इवेंट प्लानिंग टीम और मार्केटिंग टीम साथ में कर सकती है। पक्का ये अब होगा, ये ऐसा नहीं है, ये होएगा इवेंट। इसीलिए मैं आज करवाना चाह रही थी, ताकि अगर हम नेक्स्ट वीकेंड सोचें इसे आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। आफ्टर सोटी सोचते हैं। after end of the year we will think about this. And you guys gonna be like Arman ने पहले ही कह दिया है निशांत, and you guys actually going to judge, all of you. Shravani, Benavi, you are actually the rocking. हम कुछ ओपन माइक जैसा सोचते हैं, क्योंकि अरमान भाई हमारे पास एक बीट बॉक्सर भी है, एंड ही इज द ग्रेट बीट बॉक्सर। अगर मेरे साथ अगर लगता है ज्वाइन है चिराग, अगर कुछ आप कर पाओ फॉर 2-3 minutes। और अच्छा Chirag, are you there? Hello. Yeah, I'm here right now. Yeah, please. अगर थोड़ा सा कुछ माहौल सा Yeah, sure. One second. Can you hear? Yes, Chirag. One second. One second. Take your time. I'm demon. Demon.
Yeah, एक और एक और. So we yeah. So we are going on down. Eat. So we are going on down. So we are going under. Yeah. It's done now. Amazing. Wow, Wow. it's really That was amazing. so It's good. That was really so amazing. good. So good. अरमान Thank you भैया so देख much. रहे हो कितना टैलेंट रखा है कोडिंग निंजास. यार ये इवेंट प्लानिंग में नहीं है, नीलेश भैया सारे हीरे ले जाते हैं क्या यार. हम इकट्ठे मिलके इवेंट करवा रहे हैं. हाँ जरूर. ठीक है. चिराग कब से आप कर रहे हो मुझे 2 साल होने वाले हैं. अरे वाह, दैट वाज सो नाइस. सो अभी आप ऑफलाइन में हो क्या? मैं ऑफलाइन में हूँ. ऑफलाइन में हो. अच्छा, तो सोटी में पार्ट ले रहे हो? सोटी में मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे ना एग्जाम्स थोड़े क्लोज हैं और मेरी सीजीपीए बहुत कम है. अरे तो जिस दिन वो वाला इवेंट है हमारा टैलेंट हंट वाला. तो उसमें परफॉर्म कर दो. हाँ मैं कर दूंगा. वो तो मैं कर दूंगा. हाँ, और एक कोई पोइट्री के लिए कोई भी आना चाहे तो बिफोर निशांत आ जाएंगे. निशांत आ जाएगा पहले. सो हम लोग एज वी आर होस्ट, सो कोई ना कोई अपना टैलेंट दिखा सकता है ना. सो चिराग आपका चाहिए, एक निशांत की परफॉर्मेंस चाहिए, और बाकी जो और भी आना चाहे वो भी कर सकते हैं परफॉर्म. सो आप लोग दोनों की तो पक्की है, ऐसे नहीं बैकआउट नहीं करना, ठीक है? अरे नहीं भाई, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं तो करूंगा. हाँ चलो गुड. अरमान भैया अब निशांत को आपको 4th राउंड तक ले जाना है कैसे भी करके. यार ये तो नहीं पहुंच जाऊंगा मैं. ये अगर इसमें टैलेंट होगा ना, और ये अगर अपने आप ही कर जाएगा, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये अपने आप ही कर जाएगा. हाँ, ये अपने आप कर जाएगा, मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी आगे ले जाने के लिए इसको. नीलेश भाई. हाँ जी. चिराग ने ओपन माइक में परफॉर्म किया था ना, जो अभी ओपन माइक हुआ था. बिल्कुल. भाई मैं तब से इस बंदे को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, कि अगर कभी मैंने रैप करना स्टार्ट किया ना, ये पहला बंदा को इसको अप्रोच करूंगा सीरियसली यार. पहला बंदा को इसको अप्रोच करूंगा मैं ऑफलाइन. मैं सिंपल एक चीज कहता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, मैं जरूर पब्लिक स्पीकर हूँ मेरे को, लेकिन मेरे को ये चीज पता है मैं आप में से टैलेंट निकाल सकता हूँ. तुम सभी में से टैलेंट है. तुम देखो आज 6-7 लोग थे, अभी 3-4 कंटेंट राइटर्स हमारे पास ऐसे पड़े हैं जिनकी परफॉर्मेंस हो नहीं पाई क्योंकि हम इतना बड़ा सेशन करना नहीं चाह रहे थे. भी मेरे को प्रियंका का सुबह मैसेज आया कि आई एम इन,
मैंने कहा अभी आप अगले में हो, आयुषी अगर हमारी मेन हेड वो भी नहीं है सेशन में, वो भी अगले में। सो सी द टैलेंट, यू ऑल गाइस हैविंग अ टैलेंट, हर डिपार्टमेंट में बहुत टैलेंट भरा, बस अपने आप को निकाल लो। अलग जैसे अरमान ने अभी कहा ना, आपको दिखाना है कि आप में क्या इंप्रूवमेंट आई है। 2 महीने के बाद हम देखें भी यार कि हाँ हमारी तरफ से हम इकट्ठे थे, हम इकट्ठे मिलके कुछ सीखे हैं। दैट्स द थिंग गाइस। कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, कोई छोटी से छोटी भी अपॉर्चुनिटी को भी आपको ग्रैब करना है, बिकॉज आपको नहीं पता चलेगा वो कब आपके लिए बड़ी बन जाए। आपको ये ही पता चलेगा कौन आपका काम कब एक्नॉलेज करते, और आपके लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। सो ऑलवेज ऐसा एटीट्यूड रखो कि आपको कोई भी काम मिले आपको करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको कहीं भी ले जा सकती है वो चीज़। सो हैव दिस एटीट्यूड इन योर माइंड। बाकी आप लोग जेम्स हो ही कोडिंग निंजास के, राइट, एंड आगे भी देखते रहेंगे आपका टैलेंट। और बहुत बढ़िया इवेंट था आज। और चिराग, एक बीट बॉक्सिंग का भी इवेंट अब मेरे दिमाग में आ रहा है, सोच तो एक ये वाला भी वी आर करा कमिंग देंगे। विद द बीट बॉक्सिंग सेशन वेरी सून। ओके, चिराग सिखाने भी वाला। सो इट विल बी अ सेशन और अ कंपटीशन? बताओ। अभी सेशन का ही प्लान है, अगर कोई कंपटीशन का बनता है तो इकट्ठे करते हैं, कंपटीशन मिलते हैं कुछ ऐसा। नहीं, मैं ये सोच रहा था अगर मे बी कितने हैं अभी कोडिंग निंजास में, अगर हम सेशन करवाने की सोच रहे हैं तो मैं सोच रहा था कंपटीशन करा देते हैं। क्या कहते हो? कर लेते हैं बीट बॉक्सिंग। एक्चुअली हमारे ये पास बीट बीट बॉक्सिंग बॉक्सर बहुत एक ही है हार्ड ना, है, हमारे पास एक ही बीट बॉक्सर है हमारे पास। हमारे पास एक ही है, कंपटीशन में तो कर नहीं एलपीयू में बथेरे होंगे ना, हाँ, जो एलपीयू से लोग करा सकते हैं, ऑल ओवर करवाते हैं फिर। ऑल ओवर एलपीयू कराते हैं ना। विनर चिराग हमारे जी, पास है ही है, विनर हमारे हाँ पास है। हमारे पास, हाँ और क्या, एक करा लेंगे फिर। हाँ जी हाँ जी। एंड स्पेशल थैंक्स टू हर्षल, सारा इवेंट हर्षल ने मैनेज किया ओ फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। नाइस, वेरी नाइस। हर्षल देखो हर बंदे की अपनी स्किल्स है, हर्षल की जो स्किल्स है वो है लीडरशिप। ही हैविंग अ लीडरशिप क्वालिटीज, वो लीड कर सकता है, तुमको टीम बनानी आती है उसको। एंड हर्षल एंड आल्सो सागर जो हमेशा बैक एंड पे, और मतलब उसने शो किया है बहुत ही शॉर्ट टाइम में कि बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। थैंक यू सो मच सागर एंड ऑल ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स, थैंक यू। Thank you so much, Bhaiya, for giving this opportunity to us. या थैंक यू नीलेश। एंड आई फील कि सभी एक बार अटेंडेंस फॉर्म भर दो ताकि हम सर्टिफिकेट का फिर आपको जल्दी से जल्दी दे पाए। जो लीव करके आए एक बार, ठीक है। मीटिंग इज ऑल ओवर, आई थिंक ओवर, सेशन इज ओवर नाउ। निशान भैया, आई हैव टू लीव नाउ, बट इट वाज अ ग्रेट सेशन और मजा आ गया आज, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, बहुत मजा। जैसे ऑडियंस थी ना, सीरियसली चैट बॉक्स देखा था मैं लगातार, और मैं मतलब रिप्लाई नहीं कर पा रहा था ऐसे चैट बॉक्स का, इतना मतलब इतने एक्टिव चैट, मतलब चैट बॉक्स में सारे ही। तो बहुत मजा आया यार, सीरियसली मेरे को लगा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। मैं सीरियसली बोलूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंट था स्टार्टिंग से ही अपने आप से, क्योंकि मैं यू आर अ गुड होस्ट, यू आर अ गुड होस्ट, आई मस्ट से यू आर अ गुड होस्ट। मीन्स अ लॉट यार, पहली बार किया मैंने ये। गुड गुड, चलो बाय एवरीवन, थैंक Okay. यू सो मच, बहुत अच्छा।